हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे आज के सेशन में देखने वाले हैं डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग क्या है? जिसकी मशीन लर्निंग में क्या था कि हम इनपुट देते थे, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, देन उसको क्लासीफाई करते थे, देन हमें आउटपुट में मिलता था। हमें डीप लर्निंग में क्या है कि हम इनपुट देंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को क्लासीफाई करेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। देखते हैं डीप लर्निंग के बारे में डीप में। डीप लर्निंग इवन मशीन लर्निंग की एक क्या है, एक ब्रांच है दैट जो ये क्या करती है, फोकस करती है कि न्यूरल नेटवर्क पे। न्यूरल नेटवर्क मीन्स फॉर्स की जिसमें क्या है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमारी जो भी नंबर ऑफ लेयर्स होंगे वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे, जिसे कहा जाता है हिडन लेयर्स। अनलाइक ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स मेथड्स विच मे बी रिलाई ऑन हैंडक्राफ्टेड फीचर्स। जो भी हमारा मशीन लर्निंग था वो हैंडक्राफ्टेड फीचर्स पे यहाँ पे क्या था, डिपेंड करता था। डीप लर्निंग कैन ऑटोमेटिकली डिस्कवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉम डेटा, मेकिंग particularly powerful for high dimensional non-structured data like image, sound, text। यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे डेटा की जो पैटर्न है वो खुद से क्या करता है, वहाँ पे डिस्कवर करने का काम करता है। की कंसेप्ट इन डीप लर्निंग में कौन कौन से कंसेप्ट है? न्यूरल नेटवर्क, द मॉडल लूजली ऑन ह्यूमन ब्रेन। न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स अरेंज बाय लेयर्स। न्यूरल नेटवर्क जो है हमारा ह्यूमन ब्रेन से क्या है, वहाँ पे इंस्पायर हुआ है। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे न्यूरल नेटवर्क है नंबर ऑफ नोड्स एक दूसरे से, जो हमारा नंबर ऑफ लेयर्स है उस एक दूसरे से क्या है, उसको वहाँ पे कनेक्टेड है। each neuron receive input and applies weight of activated function। जब भी प्रत्येक इनपुट क्या न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ पे नोड क्या करेगा, इनपुट रिसीव करेगा। आफ्टर दैट वहाँ पे वो एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई करेगा और वो नेक्स्ट लेयर को वहाँ पे पास कर देगा। कॉमन टाइप्स इंक्लूड न्यूरॉन के टाइप बेसिकली थ्री टाइप्स है, सीएनएन, आरएनएन, फॉर्मेशनल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्करेंट न्यूरल नेटवर्क। देखते हैं लेयर्स के बारे में। कितने लेयर्स होते हैं? जैसे कि डीप लर्निंग में बेसिकली थ्री लेयर्स होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। हिडन लेयर मीन्स द फर्स्ट लेयर विथ रिसीव डेटा। इनपुट लेयर मीन्स की जो फर्स्ट लेयर है वो क्या करेगा, वहां पे डेटा को रिसीव करेगा। हिडन लेयर मीन्स द लेयर बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लेयर में जो भी हमारी क्या है लेयर्स आते हैं उसको कहा जाता है हिडन लेयर्स। आउटपुट लेयर मीन्स इट इज अ फाइनल लेयर विच प्रोवाइड which one gives us a output in the form of classification and prediction। कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में देखते हैं। प्राइमरली यूज फॉर इमेजिंग डेटा। जो भी हमारा इमेज डेटा है उस पर वर्क करता है हमारा सीएनएन, उसको बोलते हैं कॉन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। वो वहां से फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, करने का काम करता है। इसमें क्या है कि पोलिंग लेयर्स, फुल कनेक्टेड लेयर्स, कर्वेशन लेयर्स वहां पे अवेलेबल है। आरएनए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारे सिक्वेशनल डेटा पर वर्क करने के लिए। जैसे सिक्वेशनल डेटा में आता है हमारा टाइम सीरीज डेटा और हमारा टेक्स्ट डेटा। आरएनए हैव memory, allowing them to retain information from in previous input in a sequence. Long-term memory and GRU, granted recurrent unit. Networks are special types of RNN that can be capture long-term dependence। इसका जो भी हमें हमारी एक है STM और GRU लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस को काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिवेशन फंक्शन। What is the activation function? Activation function is a function applied on each neuron to produce the or to introduce the output on non-linear ways। इसमें आते हैं हमारे एल्डो फंक्शन आते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन आता है, टैनेज फंक्शन आते हैं। लॉस फंक्शन, लॉस व्हाट इज लॉस फंक्शन? लॉस फंक्शन इज मेजर द डिफरेंस पॉइंट प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम गाइडिंग न्यूरल नेटवर्क लर्निंग। डॉट फंक्शन मीन्स कि जिसमें कि नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो हमारा इनपुट है आउटपुट है उसको क्या करते हैं हम डिफरेंट मेजर करने का काम करते हैं कि हमारा व्हाट इज अवर इनपुट एंड व्हाट इट गिव्स अस आउटपुट एज आउटपुट। ऑप्टिमाइजेशन algorithm like statistic gradient descent (SGD), ADAM, and RM scores are used to adjust weight to minimize loss function। Next is backpropagation. Backpropagation, uh, the process of calculating the gradient of loss function and propagating it backward to update weight, training and overfitting। डीप लर्निंग मॉडल रिक्वायर लार्ज डेटा सेट टू ट्रेन इफिशिएंटली। डीप लर्निंग में हमें लार्ज डेटा सेट की यहाँ पे क्या होती है, नीड होती है। ओवरफिटिंग मीन्स occur when model learn noise and training data
which is technique like dropout, regularization, cat, मिलीगेट। यहाँ पे ओवर फिटिंग में हम नॉइसी और अनट्रेन डेटा को क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ट्रांसफर लर्निंग, leveraging a pre-trained model on a new but related problem, reducing training time and data requirement। ट्रांसफर लर्निंग मीन्स कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडल को न्यू प्रॉब्लम से अटैच करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि कंप्यूटर विजन, एनएलपी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जनरेटिव मॉडल्स। कंप्यूटर विजन मीन्स इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। एनएलपी मीन्स जो हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए, सिस्टमेटिक एनालिसिस के लिए, सेंटिमेटिक एनालिसिस के लिए, टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ट्रांसक्राइबिंग स्पोकन लैंग्वेज वॉइस असिस्टेंट में भी ये यूज किया जाता है, जैसे कि वहां पे हम वॉइस कमांड का यूज करते हैं। जनरेटिव मॉडल्स, जनरेटिव एडवर्टाइजर नेटवर्क फॉर इमेज सिंथेसिस अदर क्रिएटिव एप्लीकेशन में क्या क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्यों है? डीप लर्निंग हैज अ बिकम go to approach for many advanced artificial AI applications because of its ability to automatically learn from and extract, integrate patterns from large volume of data with minimal manual intervention। जो मेरा डीप लर्निंग है गो टू अप्रोच में आता है, जिसमें कि हमारा एडवांस एआई का यूज किया जाता है, जिसमें कि क्या है ऑटोमेटिकली लर्न करने की कैपेबिलिटी है और ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए हमें बहुत नीडेड होता है। पावरफुल फीचर एक्सट्रैक्शन, डीप लर्निंग पावरफुल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है जिसमें कि वो ऑटोमेटिकली डेटा को रिप्रेजेंट करता है इन इफेक्टिव वे। हाई परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्स टास्क, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जो हमें मैन्युअली करने में हार्ड जाता है, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की स्पीच को हमें क्या करना है, प्रोसेस करना चाहिए, बहुत हार्ड है, उसमें ये यूज किया जाता है। स्केलेबिलिटी विथ डेटा एंड कंप्यूटर पावर, जिससे कि डीप लर्निंग मॉडल्स इंप्रूव एज द मोर डेटा एंड कंप्यूटिंग पावर बिकम अवेलेबल। As the hardware, particularly GPU and TPUs, has advanced, it becomes feasible to train larger and deeper models on large data sets, leading to increasingly powerful models। जिससे कि इसमें हमें बहुत ज्यादा स्टोरेज की नीड होती है, जिसके लिए हम यूज करते हैं जीपीयू और आइदर टीपीयू यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लार्ज डेटा को ट्रेन करते हैं और मॉडल को क्रिएट करते हैं। रिडक्शन एंड मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग, ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑब्टेन require domain expert to design feature tailored to each application, which can be time consuming. Deep learning automates this process, reducing the need for extensive feature engineering. This is especially useful in a field like computer vision and NLP, where features are complex and task specific। when we use deep learning, हमें deep learning कब यूज करना है? Why deep learning is powerful? It is not always right solution। ये deep learning बहुत powerful है, always से हमें सही नहीं है। It tend to be best application where large amount of data, unstructured data type और complex patterns और simpler models can capture। जिसके हमारे जो सिंपल मॉडल्स है और लार्ज अमाउंट डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पैटर्न से वहाँ पे वो कैप्चर नहीं करते, दैट केस हम डीप लर्निंग को यूज कर सकते हैं। हाउ डीप लर्निंग वर्क, डीप लर्निंग कैसे वर्क करता है? डीप लर्निंग वर्क करता है हमारे लेयर्स के थ्रू। देखते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में, उसमें आते हैं लेयर्स में आते हैं उसकी 3 टाइप के लेयर्स होते हैं। लेयर्स मीन की वेयर नोड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें आते हैं कि इनपुट लेयर, दिस लेयर रिसीव द डेटा, हिडन लेयर वेयर परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, वेयर deep learning models are distinguished by having multiple hidden layers। Output layer, the layer which produces the output or classification for us। Then next आता है उसमें what is neuron? Each neuron is a layer is interconnected to neuron in the next layer, which each connection carrying a weight that adjusts model learns। Neurons it is a thing where
uh, neuron connected to the other neuron and provide carry the weight for the model to learn the data. Forward propagation. What is forward propagation? When input data enter the network, it process from one layer to the next in the process called forward propagation. Forward propagation means कि फर्स्ट लेयर से हमारा डेटा पास होगा नेक्स्ट लेयर में, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, यानी कुछ तो फॉरवर्ड हो रहा है. Each neuron receives weight sum of input from the previous layer. To apply activation function like ReLU, Sigmoid or planner pass output to the next layer. Activation function. What is the activation function? Activation function introduces non-linearities to the network, enabling it to complex patterns and relationship. Common activation functions uh, like ReLU, Sigma, tanh. ReLU means rectified linear unit, help us to mitigate variation gradient by passing positive values and zeroing by out negative ones. Next is sigmoid. Sigmoid map values to range between 0 and useful in binary classification. It is best for the to classify data in binary like 0 or 1, yes or no, spam, not spam. Tanh. Tanh map value between -1 and 1, entering data helping the network to learn faster. Next is loss function. Loss function, also known as cost function, measure the difference between model predicted outcome and actual targeted values. Uh, Common loss function include MSC cross entropy. MSC means square error, which is used for the regression, and cross entropy commonly used for the classification task, especially for the multi-class. Backpropagation and gradient descent. What is the backpropagation? Backpropagation is the process of adjusting weight to minimize the loss function. Using gradient descent or its variant like Adam-Armstrong, the model calculating gradient descent practically directive of the loss function with respect to each weight. By moving to the next direction of negative gradient, weight are adjusted so that loss decrease. This process repeats the many times because gradually improving the model accuracy. For the model accuracy, the process repeat many times. Training the model. Training involves feeding data through the network, calculate the loss, propagation errors, and adjusting weights. Over time, the network learns patterns and relationship from the data. As a training propagation process, the model gets better and predicting outcome based on the pattern has learned. Regularization and dropout. To avoid overfitting, when the model learns too much noise from the training data, techniques like regularization and dropout are applied where your data is noisy. Regularization means example like L1 and L2 regularization were used. Dropout means randomly drop nodes during training, preventing network from relying too heavily on specific path and helping it generate better new data. Evaluation and tuning. Evaluation. After training the model, it evaluated to separate validation set. Data is hasn't seen before to access how it will be generalized. Hyperparameters means like a learning rate, which batch size number of layers may be tuned to improve the performance. Once satisfied the model is tested on final test set, it verifies our model accuracy. Deployment and interface. After training and evaluation, model can be deployed to the user. User interface involves feeding data through the network and obtaining predictions similar to the forward propagation step during the training.